It's raining SUVs from full size to compact to subcompact and to micro SUVs, the Hyundai Exter. That's the latest addition in the micro SUV segment. In fact, it's positioned right at the top of the micro SUV segment and is expected to up the ante with all the bells and whistles it packs in. The subcompact SUV segment, the Nissan Magnite, is the entry point, exactly where the subcompact SUV segment starts. In terms of pricing, the difference is actually very less. Yes, it's quite narrow. And now today we are here to see how this fares against this. Yes, that's the hottest comparison of the season. Let's get started. तो चलिए शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। नाउ परसेप्शन पे डिपेंड करता है, बट टू मी बोथ कार हैव देयर ओन कैरेक्टर्स। निसान मैग्नाइट की बात करें तो काफी क्यूट और कूल इसका लुक है। ग्रिल काफी वाइड है, प्रोनाउंस्ड है, नाइस यूज ऑफ क्रोम अराउंड द ग्रिल एंड ऑल्सो यहाँ पर नीचे बैश प्लेट पे बूमरैंग DRLs एंड स्लीक LED हेडलाइट्स यू हैव। जो बोनट है ये काफी मस्क्यूलर है एंड यहाँ पर लाइन्स काफी एंगुलर हैं, तो ये सामने से एक हेवी सा लुक मिलता है, सो विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ SUV अपील। अगर प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी फंकी है, टिपिकल बॉक्सी सिल्वर नहीं है एंड आई क्वाइट लाइक दैट। काफ़ी फंकी इसकी डिज़ाइन है। ये जो ड्यूल टोन कलर ट्रीटमेंट है वाइट और ब्लू, ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड यहाँ पर चंकी क्लैडिंग, सो SUV एलिमेंट तो मिलते हैं आपको। 16 इंच व्हील्स, ड्यूल टोन फिनिश अलॉय व्हील्स, ये भी दे फिल द व्हील वेल्स क्वाइट वेल, सो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड पीछे के टाइम पे आपको टेपरिंग विंडस्क्रीन मिलती है एंड अगेन रैप अराउंड स्लीक टेल लाइट्स राइट हियर। काफी फ्लश फिनिश है, चंकी बम्पर और बैश प्लेट है। ओवरऑल इट्स अ गुड मिक्स ऑफ बोल्डनेस एंड क्यूट डिजाइन। अब अगर Hyundai Exter की बात करें तो जो इसका ओवरऑल सिल्वेट है ये काफी फेमिलियर है। बॉक्सी सिल्वेट है, स्क्वायर्ड स्टांस है, ये काफी अच्छा लगता है, बट डिजाइन एंड एलिमेंट्स वो काफी नए हैं। काफी फ्रेश एंड मॉडर्न लुक है इसका। सामने में आपको ये फ्लैट फ्रंटेड मिलता है, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक ग्रिल विच रन्स द विड्थ ऑफ द फेस, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, ऊपर DRL मिलते हैं विद एच मोटिव, नीचे प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स एंड काफ़ी चंकी सा ये यहाँ पर बैश प्लेट मिलता है। ये स्क्रू वाली डिटेलिंग भी अच्छी लगती है यहाँ पर। ऊपर में लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी शार्प है, काफ़ी एंगुलर है। इनफैक्ट दे लुक बेटर देन व्हाट यू सी ऑन द मैग्नाइट बिकॉज जस्ट द वे दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड। अब अगर साइड की बात करें तो अगेन टिपिकल SUV सिल्वेट है, यहाँ पर बॉक्सी डिजाइन है और ये खाकी ग्रीन कलर एंड पियानो ब्लैक रूफ जो ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन है, आई क्वाइट लाइक इट। One thing that deserves a special mention in terms of overall perceived quality, जो पेंट की फिनिश है वो एक्स्टर की मैग्नाइट से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो फिनिश है ये काफ़ी प्रीमियम है, वहाँ पर मैग्नाइट जो है वो थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड तो लगती है। अगर हम प्रोफाइल की बात कर ही रहे हैं तो दी शोल्डर लाइन अगेन क्वाइट प्रोनाउंस्ड, यहाँ पर इस व्हील आर्च को काफ़ी अच्छे से निखारते हैं एंड पीछे के साइड पे दे एनहांस एंड एम्पलीफाइज द हॉर्न्स ऑफ द कार वेरी वेल। ये जो डोर पर डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है एंड अगेन यू हैव अ नर्ल्ड फिनिश हियर ऑन द सी पिलर ऑफ द कार। क्वाइट कूल इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, सटल टच है लेकिन अच्छा लगता है। पीछे के साइड पे आई एम ग्लैड कि यहाँ भी आपको इनफैक्ट दोनों कार में कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप नहीं मिलता क्योंकि हम बोर हो चुके हैं नई गाड़ियों में वो देख के। काफ़ी अच्छा सा क्यूट सा यहाँ पर टेल लाइट है विद एच मोटिव, यहाँ पर रैप अराउंड ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल एक्स्ट्रा ब्रासिंग और यहाँ पर अगेन बोल्ड आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है बार के लिए। थोड़ा सा बिजी है बिकॉज नीचे बैश प्लेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही चंकी है, सेम स्क्रू ट्रीटमेंट भी है, बट येस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन दोनों गाड़ी मुझे अच्छी लगती हैं बिकॉज दोनों की अपनी कैरेक्टर है। अगर हम फिनिश की बात करें तो वहाँ पर एक्स्टर जो है वो ज़्यादा बेटर स्कोर कर जाती है। Well, in terms of dimensions, the Nissan Magnite is obviously longer and wider, but the Exter is taller. और अगर व्हील बेस की डिफरेंस की बात करें then the Nissan Magnite has 50mm longer wheelbase at 2500mm compared to 2450mm long wheelbase of the Exter. Let's see how that translates on the inside. वेल अगर रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो निसान मैग्नाइट ऑब्वियसली नी रूम आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट Hyundai Exter इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, फ्लोर हाइट लो है एंड सेंस ऑफ स्पेस काफ़ी अच्छा है थैंक्स टू दिस लार्ज विंडो एरिया। यू डोंट फील हेम्ड इन और क्लस्टर्ड। अगेन द विथ इज़ गुड फॉर 2 people, फॉर 3 इट विल बी बिट ऑफ अ स्क्वीज, लेकिन बीच में बैठना काफ़ी ईजी है।
फीचर्स आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं, रियर एयर कॉन वेंट्स मिलता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है एंड ओवरऑल कंफर्ट एंड फील इज़ गुड। हेडरूम मेरे पास काफ़ी अच्छा है एक्स्टर में। Well, knee room and rear seat comfort in the Nissan Magnite is slightly better than the Hyundai Exter, courtesy its slightly longer wheelbase. Now the cabin of the Nissan Magnite, it has its strengths and weaknesses. अगर हम इसकी ओवरऑल अपील की बात करें तो ergonomically cabin काफ़ी अच्छी है। Yes, I am at a comfortable seating position. Thigh support भी अच्छा है and the seat is well cushioned for a longer commute. Even armrest का पोजीशन या फिर डोर आर्मरेस्ट का पोजीशन अगेन इज़ वेरी गुड। द व्यू आउटसाइड फ्रॉम द ड्राइवर सीट इज़ वेरी गुड अगेन बिकॉज इट्स वेरी easy for me to spot things on the road. But the problem comes in the perceived quality. Yes, the Magnite needs to have big improvements there. Big improvements because the plastic, they don't feel premium. It feels very hard and overall the sense of upmarketness, you feel that more in the Hyundai Exter. So that is a big miss on the Nissan Magnite because otherwise the cabin, which is so well designed, it needs to have some amount of appeal to it when it comes to fit and finish. And that's exactly where the Exter, given its price range, hits it out of the park. Well, the cabin of the Hyundai Exter does feel a tad more premium than other cars in its segment, and the layout, well, we have seen this before. It's a straight lift from the Grand i10 Nios. ये जो सेंट्रल कंसोल का डिज़ाइन है ये बिल्कुल सेम है और ये जो सिंगल पीस सेटअप है इंटीग्रेटिंग द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी ग्रैंड i10 Nios में हमने पहले देख रखा है। इनफैक्ट ये जो एयर कॉन्वेंट्स की डिज़ाइन है ये भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर बॉडी कलर हाईलाइट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड देन एडिशनल टच लाइक ये जो एल्यूमिनियम फिनिश है ऑन द पेडल, स्पोर्टी लगता है। और ये जो टच है डैशबोर्ड पे रिमाइंड्स मी ऑफ टाटा कार्स, पंच के ग्रिल पे देख रखा है और दूसरे टाटा कार्स पे भी देख रखा है दिस ट्राई एरो पैटर्न। ओवरऑल जो फिनिश है ये काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग व्हील का, लेआउट का, फील्स अप मार्केट एंड it is a good thing that it is inspired from the Grand i10 Nios because that means that in terms of features, it's pretty well loaded with all the latest creature comforts and believe me, gets a bundle of segment best features. Take a look at them. हाँ जी, फीचर्स तो भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल और भारतीय जनता की फेवरेट सनरूफ। सनरूफ खोलो। Opening the sunroof. Sunroof and that too with voice command. When it comes to features, now the Nissan Magnite is decently loaded. The touchscreen, it's the 8-inch unit, similar size to what we have seen in the Hyundai Exter, but yes, in terms of graphics and in terms of response, the Hyundai Exter that again has got some positives. In the Nissan Magnite, you have wireless Apple CarPlay and Android Auto, though in the Hyundai Exter you get wired connectivity for Apple CarPlay and Android Auto. So वो एक आपको ज़्यादा अच्छा फीचर यहाँ मिलता है, बट उसके अलावा you have some common features like wireless charger, multiple charging points, cooled glove box, ये सारे features जो हैं वो similar features हैं, but again कुछ features में the Hyundai Exter scores higher, like sunroof, voice command के साथ आता है, you have proper connected tech in the Hyundai Exter, the SX optional connect variant, the Blue Link connected tech with over 60 features. Yes, that's again a big plus. You have voice integration in regional languages still. Sunroof भी हम voice command के साथ खोल सकते हैं. So those are the features, which enhances the appeal factor of the car, on which Hyundai Exter scores really well. Nissan Magnite, it has got all the features that you'll need, but हाँ, जो एक्स्ट्रा वाव फीचर्स है उसमें द मैग्नाइट स्टिल नीड्स टू बी अपडेटेड. And now it's time to get behind the wheel and see how both models fare against each other when it comes to performance, ride quality and handling. But let's get done with the figures first.
The Hyundai Exter comes with a single 1.2-litre 4-cylinder naturally aspirated petrol engine, while the Nissan Magnite comes with both 1-litre 3-cylinder naturally aspirated petrol engine and the 1-litre 3-cylinder turbo petrol engine. The 1.2-litre unit in the Hyundai Exter belts out 82 brake horsepower at 6000 rpm and 113.8 Nm of peak torque at 4000 rpm, and is offered with the option of either a 5-speed manual transmission or an AMT automatic gearbox, delivering a clean fuel economy of 19.4 km per litre for the manual and 19.2 km per litre for the automatic. The 1-litre turbo motor in the Magnite is the most powerful engine of the lot, churning out 98 brake horsepower at 5000 rpm and 160 Nm of peak torque at 2800 to 3600 rpm. And it is offered with either a 5-speed manual transmission or a CVT automatic gearbox. The turbo manual is also the most frugal of the lot, delivering a fuel economy of 20 km per litre, while the CVT turbo automatic returns 17.4 km per litre. But the 1-litre naturally aspirated petrol engine is the direct rival to the Hyundai Exter in terms of pricing, and it returns 18.75 km per litre, which is almost at par with the fuel economy of the Hyundai Exter. Having said that, this engine feels quite underwhelming in terms of performance when compared to the Exter. So in the Hyundai Exter now, and when it comes to performance, the turbo engine in the Nissan Magnite is the obvious choice because that engine has better power output and is more punchy. But comes for a price, is more expensive and quite more expensive from the Hyundai Exter. The 1.2-litre engine in the Hyundai Exter actually fares against the 1-litre Nissan Magnite, that's the naturally aspirated engine. And there, this one performs better because feels a bit more punchy, is more refined, mid-range comparatively is better, and sound, yes, NVH levels are more controlled, and that is something which you will love about the Hyundai Exter. When you rev it, you hear it only after 4300 rpm and it growls after 5000 rpm. The 1-litre engine in the Nissan Magnite, it becomes vocal even after 3000 rpm. So that's something which I particularly don't like about the Magnite, especially when it comes to NVH levels. Now, in terms of gear, so manual in the Hyundai Exter again has no issues as such. You need to work with the gears when you are overtaking, but for normal cruising, it's pretty much apt. In the Nissan Magnite though, even in the manual, you need to rev it hard to get that performance from it. Also, you have the option of automatic only in the Hyundai Exter. Yes, the AMT gearbox, though you have a bit of that head nod and there is a lag between shifts, but in the Magnite, 1-litre naturally aspirated, you don't have the option of any automatic, so that is a miss. And again, when it comes to driving dynamics, this one has superior ride quality. The suspension doesn't thud through too much when you are driving at normal speed. Only when you're crashing through them, then only you get to hear it. So feels more plush in that manner. In terms of body manners, both SUVs are actually at par. Around corners, around bends at reasonable speeds, no problem. But if you will be pushing them hard through corners, obviously body rolls will be inevitable. For Indian road conditions, the Exter offers a better balance of ride and handling because you don't feel that pinch in the back when you go over potholes or speed breakers. In the Magnite, every time you hear the suspension, so that's something which Nissan needs to work on. But yes, the way the turbo engine delivers in terms of performance, it is the obvious choice. Naturally aspirated, there the company will need to work a bit more. So behind the wheel of the Nissan Magnite now, and when it comes to performance, the turbo engine obviously will be the obvious choice because comparatively it's more punchy and has got better power output. That again is a no-brainer. Also, the mid-range is good. In terms of overall delivery, the Exter feels more smoother comparatively, but the Magnite, it has got that grunt, the turbo engine, that's quite obvious. The only issue that I have here is with the CVT gearbox, because
it is not allowing me to get the most of this engine. The way it responds is a bit snappy because there is a bit lag when it upshifts, and also there is that rubber band effect that is a bit prominent in this CVT gearbox. Now, when it comes to the 1 liter naturally aspirated engine, we have driven that engine again at length as well, and the issue there is that first, it comes only with the manual gearbox. That is again a big mess because you don't have the convenience of the automatic there. Also, the power lag is quite prominent in that engine. It will take its own sweet time to respond. Clocking triple digit speeds feels like eternity, and even the response when you downshift or when you're trying to overtake, you will have to plan it well in advance in the 1 liter naturally aspirated engine. Now, the turbo unit, this comes for a price, is quite expensive compared to the Exter, but the naturally aspirated engine is where the Exter and the Nissan Magnite have a close competition. Now, the 1 liter naturally aspirated in the Nissan Magnite and the 1.2 naturally aspirated in the Hyundai Exter, these two fare against each other quite closely. So there, the Exter definitely has the edge when it comes to performance. Yes, if you want to spend more, then the turbo in the Magnite remains the obvious choice. And finally, speaking about the driving dynamics of the Magnite, here the Magnite scores higher because the body rolls are well contained. It has got better footprint, so on the highway you are more sure in the Magnite. Around corners also, the agility, it is just slightly more agile there. The Exter, body rolls, you'll feel it just a bit more on sharp corners, but overall both cars, even around bends or sharp corners, when you are changing lanes or making quick overtakes, feel almost the same. It's only when you're pushing it hard, this has a slight edge over the Exter. Now, in terms of pricing, range for both Hyundai Exter and Nissan Magnite naturally aspirated trims begin at 5,99,000 rupees. That said, the top-end trim of the Nissan Magnite is priced at 8,75,000 rupees, while the Exter top-end SX optional without the connected tech is priced at 8,64,000 rupees, undercutting the Nissan Magnite by 11,000 rupees. And as I said earlier, the Nissan Magnite Turbo is around 2,40,000 rupees more expensive than the Exter, with prices beginning at 8,25,000 rupees and going up to 11,02,000 rupees. So what's the verdict? Who wins? Well, if you want performance, the Magnite 1 liter turbo makes the obvious choice. It is the more punchy engine of the two. But when it comes to value for money, when it comes to overall perceived quality and a feature-loaded cabin, the Hyundai Exter wins the battle, and especially over the 1 liter naturally aspirated engine. Yes, that is the engine that is not just meant for the spirit of driving. The 1.2 liter engine still manages to give you some punch and is way more refined. So yes, this one offers more bang for your buck.